ठीक है, इंशाल्लाह corrupt नहीं होगा. ठीक है. Okay, let's start off with hashing. So first of all, we have a hash family, which is simply a set of hash functions. ठीक है, these are hash functions. ये Z लिखा हुआ है, आप समझ लें. आप it's just some set of hash functions. The size of this hash function is going to be denoted by the size of h. You understand this, what this means. Then there is the universal function, which is, if you guys are familiar with key value pairs, which I'm sure you are because you've all taken DSA, data structures आप सबको पता है. So dictionary and hash maps आप सबको पता है क्या होते हैं. तो we put key value pairs, and there's basically an O of one lookup. We assume इस तरह की चीज होती है कुछ. So if you think of it in that terms, the analogy here is that the universal set are basically our keys. So these are our keys, right? And the elements of our universal set are going to the entire set is obviously going to be of size, u इस तरह डिनोट किया जाएगा. ठीक है, so जहाँ भी ये लिखूँ, it means the size of u. तो अगर हमारे पास keys basically, let's say the keys were we were hashing uh, alphabets onto integers, right? So you have 26 alphabets, and so you have A, B, C. These would be your keys, right? And we'd be hashing onto some space. Now, for simplicity, we'll just say that space maps onto some integers, right? So if I say it maps onto integer, and the size of the integer, we basically map onto values, and the values we're going to consider them keys, right? And the keys are basically going to be, you can just think of it as an array of size m, or basically the integers from 0 till m minus 1, right? There's m keys, and so it's just, it doesn't really matter what you're hashing from. It's just you're hashing to a certain value, and so it just depends on ketcha how many distinct values are there. So we're just going to represent them by the numbers 0 all the way till m minus 1, or 1 till m. It's the same thing. Okay. Now we'll move on to okay, so we're done with h, we're done with u, and we're done with m. Okay. Now we're going to define what a universal hash family is. A universal hash family is simply a hash family such that if you took the hash family, ठीक है ना? Now remember, the size of the hash family is important. ठीक है? You're going to have some set of hash functions, and you don't know how long this goes. ठीक है? And you're going to have a universal set, and you're going to have an m, where the idea here is that if you picked, so what you're going to do is try to understand how we're going to go about this claim. We're going to pick any random function in h. Okay? Once you've picked that function, we're going to say, given that I picked a random function in h, given that I picked a random function in h, the probability that the hash value of two distinct keys is the same is smaller than m. Okay? So if I took any two keys A and B in my universal set, so these are keys, right? Universal के अंदर keys हैं हमारी, and they map onto values which are basically some integer in the size m. So it's going to map onto 0, 1, 2 all the way till m कोई होगा, yeah, m minus 1, right? So they're saying if I took any two distinct keys A and B, ठीक है, मैंने ए और बी कोई भी उठा सकता हूं मैं, याद रखें, ए और बी कुछ भी उठा सकता हूं मैं. इफ आई टेक एनी टू ए एंड बी एंड आई फिक्स देम एंड आई पिक एनी रैंडम फंक्शन इन एच, तो अब where does the randomness come here? Randomness comes from the choice of h. So that's where probability comes in. So कह रहे हैं कि अगर मैंने कोई भी दो pairs उठाए of keys that are distinct, where a is not equal to b, and I picked a random function in h. Be very clear in this understanding, because then you're going to see what L universal hash families are, and you're going to think they're the same thing, but they're slightly different. So I picked any a not equal to b. This is a key. These are in the set u. And we're saying that if I picked a random hash function in h, then the probability that the hash or the mapping of these two is the same, the probability of this happening is 1 upon m. Okay? And आगे जाके we're going to visualize what this looks like, right? And then you're going to see exactly what this means. Acha, now let's see what an L universal hash family is. Okay? An L universal, I was having confusion as this hashing which server.com is kind of different from the hashing we have done like Shah. Abdul Wasi, the idea is the exact same. It's just that
Sir is not concerned with explaining how the hashing is happening for now because we're considering the proofs and the basis and the complexity around our hashing functions, right? And that depends on how good our hashing functions are, and that's going to be measured by generally our family or how we're going to be hashing. Okay, so SHA, MD5, these are, you can think of them as hash families. इस तरह सोच लो, ठीक है ना? We're not going to be concerned about exactly हम किस तरह मैप कर रहे हैं. हम देखना चाह रहे हैं कि उनके अराउंड उनकी मैपिंग के जो वो because whenever you're hashing onto a set, obviously we're assuming कि वो set थोड़ा छोटा होगा. That's what we're assuming. तो जब हम मैप कर रहे होते हैं, we want to see अच्छा how often does my hash function actually give me collisions. So that's what we're concerned with. So जो आप कह रहे हो, you're confused with how the hashing is happening. Don't focus so much on how we're hashing. You just focus on what the properties of those hash functions are. Okay? And so now, right now, when I said H is the family, we were more concerned with the properties of this family, and specifically which property? The property of how many collisions happen when I use any member of this family. ठीक है, सो फोकस मोर ऑन दैट पार्ट. ये थोड़ा होगा मुश्किल कि आप समझ नहीं पा रहे होगे किस तरह हैशिंग हो रही है, और बाद में शायद थोड़े सवाल सर कराएं जिसके अंदर ही एक्चुअली डिस्कस फैमिलीज ऑफ हैश फंक्शन, जिसके अंदर किसी तरह हैशिंग होगी. आई एम श्योर ही डिड दैट 2D कोई मैट्रिक्स वाला हमें कराया था, तो वो आई एम श्योर तुम लोगों को कराया होगा. लेकिन हाँ, खैर. सो नाउ विल मूव. सो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट a universal hash family is. वो कह रहा है कि अच्छा, if I take any two keys and I want to prevent, if you think of it like, if I take any two keys in my universal set, and I take any random function in H, the probability that these two collide across the functions. So I'm going to be comparing अच्छा मैं A और B को pick किया, and I went across all the random I went across basically any function in my hash family, and I looked at all of those hash functions कि अच्छा if I chose A and B, कितने functions के अंदर वो collide कर रहा था. The chance or the probability or the relevance, or sorry, the ratio of function जिसके अंदर collide कर रहा था या नहीं कर रहा था, is actually going to be 1 upon m, where m is basically the size of our, sorry I'm unclear है, m is basically the size of our values. ठीक है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि given h, u and m. ठीक है, अब हम देखेंगे what is an L universal hash family. An L universal hash family is basically a hash family जिसके अंदर आपके पास h है, आपके पास u है और आपके पास m है. लेकिन इस बार प्रॉपर्टी ये है कि if I take any L keys, ठीक है, L distinct keys, so A1, A1, A2 all the way till AL. इसको छोटा सा दिखा देते हैं यहाँ पे. ठीक है, if I take any L distinct keys, याद रहे L distinct keys हैं यहाँ पे. If I take any L distinct keys, then the probability that they map onto, actually, and these acha, so we're going to be concerned with the probability that they map onto some values alpha 1, alpha 2, alpha 3, and so on, alpha L tak. So we're saying pick any L. If I take any L distinct keys in my universal set, the probability that A1 will map onto some hash and A2 will map onto some hash and so on and so forth, and this guy's going to map onto a certain hash. The probability is that these keys map onto this permutation of hashes or this exact set of hashes. Catcha, A1 is pe hua, A2 is pe hua, ye is pe hua, ye is pe hua. The probability that this event happens should be, of this event happening, should be exactly equal to 1 upon m power L. अब देखो यहाँ पर था it is upper bounded by. Did I write upper bounded? Okay, yeah, I should have written upper bounded here. So I wanted this to be upper bounded. ठीक है, so remember यहाँ पे कहा गया था कि the probability of this happening is ज़्यादा से ज़्यादा 1 upon m. ये इतनी होगी या इससे भी कम होगी. ठीक है, यहाँ पर थोड़ी फर्क बात की जा रही है. पहली बात तो आप ये देखें कि मैंने कहा था कि ये चीज़ें डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन मैंने कहा था फिर ये कीज मैप हो रही हैं इन वैल्यूज पर. ठीक है यार, एक तो मैंने ना इसमें A3 डाला नहीं, A3 dot 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 AL. So we picked L distinct keys and we said the probability of these guys mapping to this exact configuration of values, the probability of this happening across our entire hash family, क्या exact कि अगर मैं इनकी hashings देखूं तो वो exactly ये बनती हैं, the probability of that happening has to be equal to 1 upon m power L. ठीक है,
पहली बात तो आप ये नोट करें कि यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि ये लोग डिस्टिंक्ट हैं, बस ये लोग ये कहा जा रहा है कि ये कोई कन्फिगरेशन है. Now, one possible configuration is let's think of our keys as the alphabets. So we're going to be hashing our alphabets onto some integer space. Okay? So our alphabets, so our universal set would have 26 characters. So we'd have a key size of 26. हर character को map करना है तो हमें किसी hash करना है onto some integer. ठीक है? Now we're not concerned with how the hashing is happening. We're concerned with what the hashing hashes onto. ठीक है? So now let's start looking at what the hashes could be. So let's say I want to see if my hash family का जो functions हैं, if my hash family, if let's say I have some hash family of functions, let's see if those mappings of my character wala set, my keys wala set, onto M, where let's say M is basically, let's say it's this integers 10. We're going to be mapping 26 characters onto 10 distinct values. So obviously there has to be some collisions in any hash function. Okay? Because every hash function is going to map every key onto some value. Naturally, some value will have repetition. That's fairly obvious. तो खैर, now let's look at what an exact implication of this would be. कहा यह जा रहा है कि हम मैप कर रहे हैं कैरेक्टर्स को. लेट्स से m का साइज है 10. सॉरी, इसका साइज 10 है, इसका साइज है 26. ठीक है? एंड लेट्स से, तो अब कहा यह जा रहा हो कि इफ आई गो अक्रॉस ऑल माय random hash functions, so my hash family will have h1 h2, उन सब के अंदर all the keys will be mapped onto some distinct value. कि अच्छा a b c d, h1 जो है इसको इस पे मैप करता है, इस पे मैप करता है, इस पे करता है. h2 थोड़ा फर्क करता है, a को इस पे मैप करता है, इस पे मैप करता है, इस पे मैप करता है. पूरा टेबल बन सकता है इसका इस तरह. ठीक है? तो this would imply कि अच्छा, if I take, let's say, if I want to see if this hash family is 3 universal, let's say, so then I would take any 3 keys. That means if I take any 3 keys, let's take the keys A, A, B, and let's say D. ठीक है ना? If I take any 3 random letters, A, B, or D ले लिए मैंने, the probability that this guy will match onto some configuration. Let's say the configuration is this guy matches onto 2, this guy matches onto 0, and this guy matches onto 1. ठीक है? Now we're not considering कि same हो रहा है या different हो सकता है. This could have mapped onto 2, 2 or 1, or 2, 2, 2. We're not concerned with what the configurations are. We're just saying कि किसी भी 3 keys को लो, उनको देखो कि अच्छा, those being mapped onto some value of values. The probability of this exact mapping happening in any random, in all of our h functions, h1, h2, h3, h4, the probability of that happening, this exact configuration occurring, should be 1 upon m power l. In this case, that would be 1 upon m cube. So that would be 1 upon 10,000. Sorry, 10 cube, which is basically 1 upon 1,000. ठीक है? So the probability of this hash occurring in across all our hash functions, अगर मैं सारे अपने hash functions देखूं, फर्ज कर लीजिए हमारे पास 100 hash functions थे, तो सारे 100 hash functions में देखते तुम कि अच्छा यार, ABD की मैपिंग कितने में ABD की मैपिंग 201 आ रही है, 201 आ रही है. Let's say only 10 of them got the mapping, ABD की मैपिंग सिर्फ 10 functions के अंदर 201 थी. ठीक है? So then the probability of these 3 being mapped onto any given configuration would be 10 upon 1000. So that would mean that you are not 3 universal. You know why? Because 3 universal dictates कि अच्छा, मेरे जो universe थी और मेरी जो keys थी, and if I looked across all my hash functions की family, the probability of any 3 distinct keys being mapped onto any given configuration, any possible given configuration, should be this event happening, this exact event happening should have a probability exactly 1 upon 10,000. ठीक है? The probability for any given possible mapping should be 1 upon 1,000. ठीक है? Now let's move on to the question. The question here is, show that a 2 universal hash family is also a universal hash family. ठीक है? So I'll give you guys like 2 or 3 minutes. अभी exactly 11:16 हो रहे हैं. I'll wait until 12, 11:18 for you guys to come up with something. If you have anything that you would like to
share any thought processes that come to mind या any direction to move in share करो. अगर तुम चाहते हो अपने पास काम करके मुझे बता दो आपका solution क्या था या आपने कैसे किया. अगर नहीं आ रहा तो we'll just start after 3 minutes. 11 16 और 19 तक आपके पास टाइम है. Imad, alpha 1, alpha 2, these are not distinct. No, this is not distinct. It can be anything, which I'm sure आपको पता चल गया होगा. So why use different subscripts to represent them? Because Imad, we're representing a given configuration, right? We're not. If I gave them the same subscript, or if I gave them, if I just call them alpha 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 alpha, that would imply that they're the same, right? I have to give them different indices, but I won't say anything about the nature of them. शुरू में तो मैंने कहा था A1, A2, A3 all the way till AL, where A1 is not equal to A2 is not equal to A3 and so on and so forth all the way till AL. But alpha 1, alpha 2 all the way till AL may be equal to each other at any given, pair. Take pairs of size 2 for every data so it becomes a universal hash family. Abdullah Wasi, I think you're moving in the right direction. थोड़ा सा ज़्यादा formally bolo because थोड़ा सा it's up in the air, you know. What you've said is correct, but you could go in any direction with that. Ibtan, can you help me understand what L universal is trying to tell? For example, in universal hash family, I understand the probability of collision should be bound, which makes sense. बिल्कुल सही कहा आपने इब्तान. इब्तान, think of it this way. उसमें कहा जा रहा था collisions. यहाँ पे कहा जा रहा है any given like mapping. इस तरह समझो. So 3 universal would be concerned with any 3 की mapping जो है, the probability of this being mapped onto any certain configuration. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी किसी भी 3 एलिमेंट्स को उठाऊं और उनको कहूँगा अच्छा तुम जो है तुम 3 की इस चीज़ पर मैपिंग या तुम 3 की मैपिंग जो है जो होगी जो भी होगी 0 1 2 हुआ या 0 0 0 हुआ या 1 2 0 हुआ या 1 2 3 कुछ भी हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैपिंग हैपनिंग फॉर यू 3 एज टू बी एग्जैक्टली 1 अपॉन m क्यूब. आप इस तरह समझे तो वो और भी स्पेसिफिक हो रहा है. मजीद इसमें ये भी कंस्ट्रक्शन आ जाती है कि वो बाउंडेड नहीं है, वो एग्जैक्टली इज इक्वल टू है. सो इट्स इफ यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक इट्स इंश्योरिंग या इट्स इनकरेजिंग यू या इट्स रिस्ट्रिक्टिंग अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल योर हैशेस. इस तरह सोचो. ठीक है, 19 हो गया. लेट्स स्टार्ट. डज एनीवन वांट टू गिव एनी थॉट प्रोसेसेस या कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वरना मैं शुरू कर दूं एक्सप्लेनेशन. ठीक है, वी विल जस्ट स्टार्ट. अच्छा, तो so first let's formalize what we're trying to work with. We're trying to show that 2 universal hash family implies that I am also a universal hash family. So I will start from some condition, some base truth that I know, and I would arrive at some other truth. What is that some other truth? That my function also happens to be a universal hash family. To show that, I will start from the properties of a 2 universal, and I will get to the probability, I'll get to the event or the claim that अच्छा हाँ मैं मजीद अपने हैश सेट के बारे में अपने हैश फैमिली के बारे में ये भी कह सकता हूँ कि यार अगर मैं कोई भी 2 डिस्टिंक्ट कीज उठाऊँ ना उनका हैश सेम होने का प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन m से कम है. मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ. ठीक है. अब मेरा जो 2 यूनिवर्सल था वो तो इससे कंसर्न ही नहीं था कि तुम दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी है या डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है. वो कहता था कि अगर मैं कोई भी 2 उठाऊं ना 2 यूनिवर्सल अगर मुझे कह दिया गया है कि मेरा हैश फैमिली 2 यूनिवर्सल है तो मुझे एक चीज तो मुझे पता है कि अगर मैं कोई भी 2 डिस्टिंक्ट कीज उठाऊं जो सेम नहीं है और उनके हैशेस निकालूं. ठीक है. अब मैं इन दोनों के यार अगर मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट कीज हैं यू के अंदर और मैं इनके हैशेस निकाल रहा हूं I cannot say anything about them colliding. I can't say anything about them. I can say something about the nature of this value. The probability that they map onto some value x and this guy onto y.
ठीक है, the probability of x, this guy mapping onto x and that guy mapping onto y, this event happening, इसकी चांस है exactly 1 upon m square. इसका चांस है exactly 1 upon m square. अब इससे ताल्लुक बनाने की कोशिश करो यूनिवर्सल हैश फैमिली से. There will be m square configurations for any arbitrary xy. Out of these, at most m hash values can be the same. So collision probability will be at most m upon m square. Perfect, Manur. I think you're बिल्कुल आपने सही पकड़ा. So I'll just formalize exactly what Manur said. So two universal is already implying, as Manur said, कि अच्छा हमें पता है कि अगर मैं दो डिस्टिंक्ट कीज लूं तो उनकी वैल्यू हैपनिंग टू बी एनी सम कन्फिगरेशन इज 1 upon m square. ठीक है, आई एम नॉट कंसर्न विद ऑल ऑफ द configurations. I am only concerned with the configurations in which these two happen to be the same. ठीक है, so basically I am saying कि h of a और h of b अगर मैं देखता तो ये वाला भी कोई फंक्शन, तो ये वाला this guy would map onto some z and this guy also maps onto the same z. ठीक है, तो पहली बात तो ये देखें, what is the probability of this guy hashing onto z and this guy hashing also onto z. z अभी छोड़ दो कि z की वैल्यू क्या है. ठीक है, लेट्स से हमारा m का साइज कुछ भी होता. If I am two universal, the probability that this guy and this guy and a and b can be anything, because I'm two universal, I know that if I'm two universal, I can pick any two distinct keys and those guys mapping onto a certain configuration. z कुछ भी हो सकता है, ए बी, यू नो 1 2 2 2 3 कुछ भी हो सकता है. अभी हम कह रहे हैं कि ये दोनों मैप कर रहे हैं z पे, ये भी मैप कर रहे हैं z पे. The probability of this exact configuration happening is exactly 1 upon m square. है ना, so यहाँ ये वाली बात तो क्लियर है, because we know this is true, we know this claim is true for any xy, so obviously it will be true for zz. कि यार अगर मैं कोई भी दो डिस्टिंक्ट कीज उठाऊं और उनके हैशेस देखूं, उनके हैशेस बीइंग समथिंग एंड समथिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 upon m square. This is arbitrarily true for a two universal hash family. Now we'll like to look at what the relation between this and our universal probability is. यूनिवर्सल हैश फैमिली क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि अगर मैं कोई भी दो डिस्टिंक्ट कीज उठाऊं, the probability of those two having the same hash across any function in our hash family, that probability has to be bounded by 1 upon m. It can be 1 upon m or less. ठीक है, so the denominator can be m या उससे कम अगर ऊपर 1 आ रहा है. ठीक है, अच्छा पहले हम देखते हैं. अच्छा, सो ऑल यू हैव टू एक्चुअली डू हियर कि अब हम इसमें देखो कि अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई, अब हमें बस देखना है कि नाउ लुक एट all the possible collisions. Now if I take any two keys, let's take any two keys, let's call them R and S. मैं कोई टू कीज उठाता हूं R और S और मैं कहता हूं कि इन दोनों की हैश सेम होनी चाहिए. अब इन दोनों की हैश सेम तो होगी, so let's call that value, let's say they both hash onto Z. Now Z is some value in our M वाला set. It is some integer, कोई भी वैल्यू हमारे M के अंदर. पहले तो आप ये बताएं कि Z कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? M. That's fairly obvious. So we know that R and S colliding could happen on Z different keys. ठीक है, so R की मैपिंग और S की मैपिंग Z पर होना, this can happen in M different ways. ठीक है, so if I take any two arbitrary keys which are not equal to each other, the probability of them coming onto the same thing should be what? The probability of this guy so the probability of this guy being hashed onto Z and this guy hashed onto Z, let's say any किसी एक को ये आपने Z उठा लिया अपने M के अंदर, this happening is exactly 1 upon m square. But I want to look at all the possible events जिसके अंदर इन दोनों का हैश सेम था. So I'd have to be looking at all the events जिसके अंदर Z और Z सेम होता है. So that would mean going across all the possible values of Z. How many possible values are there of Z? There are m distinct values. So उन सारे events की probabilities मुझे sum करनी है. ठीक है, तो मेरे पास ऐसे कितने events हैं? मेरे पास m events हैं. So for any two distinct keys mapping onto Z, there are
m distinct events of there are exactly m different versions of this event happening. Okay, for any two arbitrary keys. So all m events have the probability 1 upon m square. So I'm going to take 1 upon m square plus 1 upon m square, and I'm going to see इस पूरी probability का sum क्या आता है. So this is going to be m times 1 upon m square because there are m possible such events. अगर इन सारे events का मैं sum लूँ तो मेरे पास आ गया m upon m square is 1 upon m. So if I am two universal, if I am two universal and I pick any two keys A and B that are not equal to each other, and I try to notice, what is the probability of these guys hashing onto the same value? Well, that probability is exactly 1 upon m in a two universal hash family. And so we've shown that if I take any two keys, for them to collide, that probability has to be exactly 1 upon m. Universal तो कहता था upper bounded by 1 upon m. Two universal तो कह रहा है उन दोनों का collision has to be exactly 1 upon m. Is the proof clear? Does anyone want me to repeat any part of it? दोबारा बताऊं? कुछ नहीं समझ आया? Okay, I'm going to assume everyone got that. Let's move on to the next question. Can you please repeat the proof? Sure. Hashir, we started off, first understand the question. The question was, show that being a two universal hash family implies that you are also a universal hash family. A two universal hash family means कि अगर मैं किसी दो distinct keys की configuration देखूं, configuration से मुराद है उनके hash की event कि अच्छा ये वाला किस पे hash हुआ, वो वाला किस पे hash हुआ. This exact configuration happening, any configuration happening for two distinct keys, उसकी probability has to be 1 upon m square. So this event across all my hash functions cannot occur more than 1 upon m square times. Yeah, well, you know, the probability of that event cannot be more than 1 upon m square. In fact, it has to be exactly 1 upon m square. ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि अच्छा if this is true for my hash family, how can I show that this is also universal? Universal कहता है कि अगर मैं दो distinct keys लूँ, थोड़ी फर्क बात है, वो कह रहा है कि अगर मैं दो distinct keys लूँ, उन दोनों का hash same होने का chance across all my hash functions has to be at most 1 upon m. ठीक है? Two universal कह रहा था कि दो keys की hashes being on to value a alpha and beta, this exact configuration की probability is exactly 1 upon m square. Universal कह रहा है दो distinct keys की hashes same होने की probability across all my hash functions has to be upper bounded by 1 upon m. थोड़ी सी फर्क बात है. फिर हमने कहा कि अच्छा given my information from my two universal hash family, I know that if I took any two arbitrary two distinct keys, I know one thing about them. That thing is that those two mapping onto any configuration is exactly 1 upon m square. So I'm only concerned with the configurations that give me the same value. So I said, acha, if I take any two arbitrary keys and they map onto the same key, let's call that key z, the probability of this event happening is 1 upon m square, given I had fixed my z, any single z in my set m, which is my possible values. फिर मैंने कहा अच्छा, well, this event can happen in multiple different possibilities, and there are exactly m different events, versions of this event. कि z वाला जो key है, this guy mapped onto 0, या these two mapped onto 0, या these two mapped onto 1, या 2 all the way till m. Given that you had m keys, let's say अगर आपके पास 10 थी तो 0 1 2 3 4 9, तो ये 0 दोनों 0 पे हो सकते हैं, या दोनों 1 पे हो सकते हैं, या दोनों 2, so on so forth all the way until 9. So the possibility of all these events will tell me, if I take any two arbitrary keys, what is the probability that these two have the same value, because these are all the possible events. If I just sum up all the probabilities, I'll know exactly what is the chance of these two having the same hash. And so all of those events had 1 upon m square probability. There were m such events. M times 1 upon m square is equal to exactly 1 upon m, which tells me if I'm a two universal hash family and if I take two arbitrary keys which are distinct, then the probability that they hash onto the same value is exactly 1 upon m. Can you please help me with the difference between uniform, universal, and independent hash family? इतबान ये हम इंशाल्लाह बाद में focus करेंगे. Let's try to get done with the content of the quiz first. Sorry, the tutorial first. अगर ये पूरा हो गया और बाद में time हुआ तो I'm sure we'll do that. खैर, ठीक है. अच्छा जी. Now we'll move on to the second part, which is, now let's look at an exact. So this is going to help you visualize exactly what I mean by probability.
हमारे पास कोई हैश फैमिली है, उसके अंदर दो ही वैल्यूज हैं, h1 एंड h2। हमारे पास हैश फैमिली के अंदर दो ही हैश फंक्शंस है। हमारे पास कीज हैं a और b एंड दे विल मैप ऑन टू बाइनरी वैल्यूज 0 या 1। The first function hashes a onto 0 and b also onto 0, and h2 maps a onto 1 and this guy onto 0. पहले बताएं, is this a universal hash family? अच्छा, अब यूनिवर्सल हैश फैमिली देखने के लिए हमें क्या करना है? हमें देखना है कि अगर मैं दो डिस्टिंक्ट कीज उठाऊं a और b which are not equal to, and I will look across all the hash functions, और मैं देखूंगा, अच्छा, what is the probability of these two keys hashing? And I'd have to do this for every pair of distinct keys. ठीक है, every pair already implies two. So I'd have to do this for all pairs of distinct keys, a not equal to b. In this case, it's simple. There are only two keys, so you just have to look at these two. Go down the hash functions and look at the probability of these guys colliding. अब पहली चीज तो आप ये बताएं, what is the size of m? M is equal to 2. 2, How do you get to know that? 0 or 1. Exactly. So the values that you're mapping onto is the size of your m. In this case, this is a binary hashing. Binary hashing, matlab, you get the idea that they're hashing onto a binary set of values 0 या 1. इत्तेफाक से there are also two hash functions, और इत्तेफाक से there are also two keys. This is not the case all the time. इस वक्त हुआ है कि दो hash functions भी थे, दो keys भी थी, दो values भी थे. Don't assume this is always going to be the case. Hash family भी बड़ी हो छोटी हो सकती है, कीज भी ज़्यादा कम हो सकती हैं, और हमारे पास जो m की स्पेस है वो भी कम ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, सो टेल मी, इज दिस अ यूनिवर्सल हैश फैमिली? बट कीज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, और नो, यू कैन से अबाउट एनीथिंग। वन, आप कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, एक सेकंड, व्हाट डिड यू से? यू सेड keys will always be greater than equal to m, right? No, that's not necessary. For practical purposes, that might be true, लेकिन we can't really say that. Abdullah Ahmadani says yes, this is a universal. Abdullah, आप समझाना चाहेंगे? हाँ, भी समझाना चाहता, खैर। Does anyone else have any guesses? तुक्का मार लो। Yes, Hasha also says yes, this is a universal hash family. Hasha, would you like to elaborate? माइक खोल लो यार। नहीं बोलना तो मैं समझा दूं। No, I was typing it out. I think they will be because the probability of them hashing is half, and it's 1/m because m is 2. Perfect, that's perfect. So first let's study the claim of the universal family. For this to be a universal hash family, if I take any two keys a not equal to b, then the probability of them hashing onto the same value has to be at most 1 upon m. पहली तो बात, आप 1 upon m निकाल लो, m की वैल्यू हमें पता है 2 है, so the probability of them hashing onto the same value has to be at most 1 upon 2. And what are we looking across? We are looking across all our hash functions. हमारे पास दो हैश फंक्शंस हैं, तो सब में से देखो कि कितने फंक्शंस में ये दोनों कोलाइड करते हैं। तो ए और बी ही होगा, इनको ही देखना है आपको। पहले फंक्शन के देखो, कोलाइड करते हैं या नहीं कोलाइड करते? करते हैं। अब इसको देखो, कोलाइड करते हैं? नहीं करते। सो 1 आउट ऑफ 2 चांस है ए और बी का कोलाइड करने का। ठीक है, अगर यहां पर एक और कॉलम होता सी, तो फिर हमें क्या करना पड़ता? हमें ए बी, ए सी और बी सी सबको देखना पड़ता, और सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ती कोलिजन के। सारों की प्रोबेबिलिटीज 1 अपॉन 2 से कम आनी चाहिए। ठीक है, या इज इक्वल टू आनी चाहिए। In this case, it was simple. There was two. Is this also a two universal hash family? Abdullah says no. Would you like to explain?
अब्दुल्ला भाई बस चौड़े कराते हैं यस नो सही आंसर देके एक्सप्लेन नहीं करते खैर सो शुड आई एक्सप्लेन ठीक है सो यस अब्दुल्ला करेक्ट दिस इज नॉट अ टू यूनिवर्सल बिकॉज टू यूनिवर्सल मीन्स कि इफ आई टेक एनी टू ए एंड बी विच आर नॉट इक्वल टू दे मैपिंग ऑन टू एनी कन्फिगरेशन अच्छा पहली बात तो यहाँ पे देखें कन्फिगरेशन क्या होंगी एग्जैक्टली इक्वल्स टू वन अपॉन एम ऐसा ना आप कुछ पूछ रहे हैं आप बता रहे हैं खैर हाँ सो टू यूनिवर्सल कह रहा है कि अगर मैं किसी भी दो पेयर्स ऑफ कीज को देखूं जो डिस्टिंक्ट हैं उनकी हैश ऑन टू सम कन्फिगरेशन सो देयर हैश ऑन कन्फिगरेशन so that configuration अच्छा what can this configuration be how many possible configurations are there for इन दोनों की hashes perfect so 0 0 0 1 1 0 1 1 perfect thank you so there's four possible configurations two universal claims that any configuration की probability has to be exactly 1 upon m ठीक है तो यहां पर तो वो चार कन्फिग्रेशन ही नहीं आई तो जाहिर सी बात है कुछ की तो 0 0 है वो तो आपको ऑब्वियसली पता चल गया ये टू यूनिवर्सल नहीं होने वाली लेकिन खैर आप हम देख लेते हैं कि क्यों नहीं है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कन्फिग्रेशन इज व्हाट exactly 1 upon 2 because this configuration occurs in 1 out of 2 of the hashes so इसके लिए सही होता what is the probability of the configuration 1 0 इसका भी 1 upon 2 है so this occurs 1 upon 2 लेकिन हैश फैम अगर टू यूनिवर्सल है तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए 1 upon 4 perfect why because 1 upon m remember when I am L universal that means my probability of any configuration should be 1 upon m power L in this case this is 1 upon m power 2 because I'm checking for 2 universal so any configuration की possibility should be 1 upon 4 जो भी पहले मेरे से पूछ रहा था कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द इंट्यूशन बिहाइंड दिस वाज आई थिंक दैट वाज द क्वेश्चन दिस शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट L universal implies it's basically trying to ensure that any configuration happening across all my hash functions should happen with a certain possibility ठीक है now let's move on to the last question it's the same मतलब nature of the question is the same अब कहा जा रहा है कि there's A B and C and there's going to be 4 hash functions now ठीक है H1 H2 ठीक है so this is 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 अच्छा is this universal is this hash family universal यूनिवर्सल में हमें क्या देखना है हमें हर पेयर को देखना है कि उन दोनों की एवरी पेयर सो ए बी को भी देखना है बी सी को भी देखना है ए सी को भी देखना है चेक फॉर ईच ऑफ द पेयर्स गो डाउन द हैश फंक्शंस चेक कितना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कोलिजन अब्दुल्ला सेज यस अब्दुल्ला वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इब्तान यस 4 upon 8 इब्तान आप क्या कह रहे हैं इट इज यूनिवर्सल इत्बान सॉरी I get that you're saying yes, लेकिन 4 upon 8 अच्छा मैं समझा नहीं खैर 4 collisions out of 8 possible configurations सब अच्छा हाँ हाँ सही सही बिल्कुल परफेक्ट तो ए बी की collision कितनी होती है so let's look at ए बी का पेयर what is the probability of ए बी colliding 1 2 so 2 upon 4 chance कितना होना चाहिए कितना होना चाहिए 1 upon m का साइज है 2 तो 1 upon 2 होना चाहिए बिल्कुल सही सो m is equal to 2 so the probability should be upper bounded by 1 upon 2
सो नाउ वी गोना सी सबकी प्रोबेबिलिटीज 1/2 से कम है या नहीं. ए और बी को कोलिजन का चांस क्या है? यहां पर कोलिजन होती है, यहां पर कोलिजन होती है. सो 2/4 1/2 इसका हो गया सही. ए और सी का देखते हैं. यहां पर कोलिजन होती है, यहां पर कोलिजन होती है, यहां पर सेम है, यहां पर डिफरेंट, यहां पर डिफरेंट. सो 2/4 अगेन. अब बी और सी को देखते हैं. यहां पर कोलिजन होती है, यहां पर कोलिजन होती है. सो वंस अगेन 2/4. ठीक है, perfect. So this is a universal hash family. We've seen all the pairs A, B, B, C and AC. सारों की collision hash का collision होने का chance is exactly 1/2. It has to be upper bounded by 1/2. So yes, we are universal. Are we 2 universal? In 2 universal, I'm going to be looking at A, B. I'm going to look at all the possible ABCs, सारे pairs की सारी possible configurations. All of those configurations have to be exactly 1/4 chance because M is 2, so it has to be 2 universal के लिए is 1/m square. तो ए बी के लिए 0 का क्या चांस है? ए की चांस आता है across 4. You will look at this is a perfect binary वाला बना हुआ है 0 0 1 0. So yeah, so there's a 1/4 chance of this configuration, there's a 1/4 chance of this, 1/4 chance of this, 1/4 chance of this. Let's look at BC. There's a 1/4 chance of 0 0, there's a 1/4 chance of 0 1, there's a 1/4 chance of 1 1, and so on and so forth. You get the idea. Now let's look at AC. ए और सी 0 0 का एक चांस, 1 1 का एक चांस, 0 0 का एक चांस, 1 0 का एक चांस. सो ऑल ऑफ द पॉसिबल, सारे देखो काम कितना हमने किया. ए बी का चेक किया, बी सी चेक किया और ए सी भी चेक किया. उन सबके सारे कन्फिगरेशन चेक किए और उन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली. सारों की प्रोबेबिलिटीज एग्जैक्टली 1/m² आनी चाहिए. सारों की प्रोबेबिलिटीज 1/4 आई, विच मीन्स यस यू आर 2 यूनिवर्सल. इज दिस ऑल्सो 3 यूनिवर्सल? अच्छा, एक चीज हमारी कितना टाइम रहता है? 30 मिनट्स काफी है. Was I correct by mistake or my working was correct for universal calculation? Itban, I think you are correct. I didn't exactly get what you were saying. You said 4 collisions out of 8 possible configurations. Universal is not concerned with configurations. Universal is concerned with hash collisions. So you'd be concerning yourself with, अच्छा, मैंने एक पेयर उठाया, मैंने सारे hash functions visit किए, देखा कितनों में इनकी collision हो रही है. मुझे उससे मतलब है. 8 पॉसिबल कन्फिगरेशंस तो हमें कहीं भी नहीं देखनी. हमें 2 यूनिवर्सल में या 1 यूनिवर्सल में कहीं भी देखनी होती. अगला सवाल मैं कहूंगा 3 यूनिवर्सल. 3 यूनिवर्सल की आपको देखनी होगी. सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज दिस 3 यूनिवर्सल? 3 यूनिवर्सल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि यार टेक एनी 3 डिस्टिंक्ट कीज. इन दिस केस देयर इज ओनली गोना बी 1 इंस्टेंस of 3 distinct keys, and Rafe says it is. So all right, let's see Rafe. So 3 universal would imply that the probability of any 3 distinct keys having any given configuration is exactly 1/m cube. Don't forget this part. Okay? So the probability of these 3 having any possible configuration has to be exactly 1/m cube. अब पहली बात तो आप ये नोट करें कि अगर मेरे पास 4 hash functions हैं, so the probability of any configuration at like कम से कम हो सकती है 0 0. Actually wait. Okay, yeah, I think it's going to be 1/4. I'm not exactly sure with that claim. Like you'll go exactly where you get exactly what I'm about to say. A B C की configuration क्या क्या हो सकती थी? पहली बात तो ये है 0 1 0 1 0 1. कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है. इत्बान आपकी ये बात यहाँ अप्लाई होती है. ठीक है, तो पहली बात तो हमें क्या करना है? इस 3 का we only have to look at this 1 3 tuple. ठीक है, because there is only one instance of 3 distinct keys यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास keys ही 3 हैं. ठीक है, तो इन 3 की configurations क्या हो सकती हैं? 0 0 0 0 0 1 so on so forth. You guys know binary, so you know there's going to be exactly 8 possible configurations. ठीक है, now we already know that 4 configurations तो आनी नहीं वाली. तो आपको अभी से देखकर पता चल जाएगा कि यार ये यूनिवर्सल तो नहीं है, 3 यूनिवर्सल तो नहीं है, क्योंकि उन 4 configurations की probability क्या है? 0.4. लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं बाकियों की क्या है. इस configuration की probability क्या है? 1/4. This configuration also does not occur twice. This configuration does not also occur twice. This configuration also. इन सारी configurations की probability क्या है? 1/4. लेकिन 3 universal तो चाहता है कि उन सारी configurations की possibilities क्या होनी चाहिए? 1/m cube, which is basically 1/2 cube, 1/8. Any configuration should have a probability 1/8. And now you can see exactly what L universal wants. ठीक है, L universal अगर होता तो basically this would demand a perfect distribution of each hash. खैर,
कोई और सवाल या हम ख़त्म करें आज के लिए? दिस इज द एजेंडा। आई थिंक दिस इज रिलेटिवली इजी, तो आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा सवाल होंगे। अगर कोई चाहता है मैं कोई पार्ट रिकैप कर लूँ तो मेरे से अभी पूछ लें, वरना देर हो रही है, आप सबको सोना चाहिए। Can you go over how you prove this to be two universal? ओके, सो टू यूनिवर्सल के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि दो कोई भी टू कीज लूँ, उनकी किसी भी पॉसिबल कन्फिग्रेशन की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1/m³। अब इफ मानूर मैं आता हूँ आपके सवाल पे, मुझे एक सेकंड दे। सो इफ आई गो अक्रॉस ऑल द पॉसिबल पेयर्स and if I look at any configuration they can have, all of those configurations should have an exact probability of 1/m². So in this case m is 2, so any possible configuration of any two arbitrary distinct keys has to be exactly 1/m², which is 1/2², which is 1/4. तो अगर मैं a और b की configurations देखूं, a और b could map onto 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So all of these configurations for these two keys have to be exactly 1/4 chance. So there is exactly, अगर मैं इन दोनों की configuration देखूं 0 0 1 0 0 1 और 1 1, they all occur exactly 1 out of 4 times. ठीक है? So the probability of any configuration is exactly 1/4, matches our criteria. Do the same thing for B and C, you'll get the exact same result. Do the same thing for A and C, you'll get the exact same result. Any possibility, any configuration for any two distinct P's is exactly 1/4, and hence you are two universal. Mahnur का सवाल था, if the size of hash family is smaller than ML, then obviously not L-wise independent, right? Yes, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, बिकॉज फिर तो आपके पास उतने पॉसिबल कन्फिगरेशंस ही नहीं अपीयर हो सकते। मोहम्मद इमाद, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एल यूनिवर्सल और एल यूनिफॉर्म? यार मुझे एग्जैक्टली एल यूनिफॉर्म मुझे पता नहीं है, तो आई कैंट रियली आंसर दैट राइट नाउ। फॉर दिस क्वेश्चन, इफ इट्स एल यूनिवर्सल, will the hashing functions go till h8 with every binary possibility covered, meaning it satisfies the universe for this question? Oh हाँ, आप कह रहे हो क्या चाहे, हाँ बेसिकली यस, आई थिंक यस यू आर करेक्ट। उसमें भी आपको देखना होता कि हाँ बिल्कुल, थ्री यूनिवर्सल के लिए आपको देखना पड़ता कि यार इस केस में तो बहुत सिंपल होता, बिकॉज देयर इज एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ थ्री यूनिक कीज। तो बस उस कन्फिग्रेशन के लिए जो सारे पॉसिबल मैपिंग्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी कर लो और आपको मिल जाएगा। और कोई सवाल? तो हम ख़त्म करते हैं। आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ, होपफुली सेव होगी।